टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटेशन. ठीक है. नाउ तो ग्रेविटेशन कंटेन्स टू थिंग्स. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है. नाउ तो न्यूटन्स हैज गिवन समथिंग. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ states that to every action there is an equal and opposite reaction. That we have learned. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ये. नाउ तो in this gravitation Newton's again states that in this universe every object will attract with each other. Every object will attract with each other with certain force. ठीक है. That we will write every object, or you can say in universe every object attract with each other with certain force. ठीक है. Now this certain force is known as gravitational force. This certain force is known as gravitational force. ठीक है. Now every object means suppose we contains two objects. ठीक है. Now तो two objects they contain some mass 1 and mass 2. तो this gravitational force states that force is directly proportional to the product of two masses. That means m1 into m2 and inversely proportional to the square of the distance between them. And inversely proportional to the square of the distance between them. That means r square. Now तो अब इसको हम समझते हैं ये क्या बोल रहा है. तो दिस इज दे आर द मासेस. ठीक है. Now तो r इज योर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स. दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2. 1 and 2. It contains the mass m1, it contains the mass m2, and the distance between them is r. Same thing we have done. Now just join them. What you will get? We will get F is directly proportional to m1 m2 by r2. ठीक है. नाउ अब प्रोपोर्शनल को हम हटा देते हैं. तो वी विल गेट अनदर फॉर्मूला. दैट इज योर एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई r2. ठीक है. नाउ तो दिस g इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना. तो यूनिवर्सल constant gravitational. This is known as universal gravitation constant. ठीक है. नाउ और यू कैन से सिंपली कांस्टेंट. ठीक है. नाउ तो इन दिस व्हाट इज योर जी नाउ. दैट मीन्स व्हाट इज योर कांस्टेंट. तो वी कैन से जी इज इक्वल टू एफ
r square by m1 into m2. ठीक है ना। अब इसको देखो, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ दैट। तो वी कैन से फोर्स का यूनिट इज व्हाट, न्यूटन। न्यूटन। एंड द यूनिट ऑफ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या रहेगा हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या रहेगा हमारा, सीरीज न्यूटन। आर इज द डिस्टेंस, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, बाई m1 m2 आर इन केजीज, तो केजी स्क्वायर। ठीक है। नाउ कम्स, तो यूनिट इज ऑल्सो ओवर, नाउ कम्स द वैल्यू। ठीक है। नाउ तो आपका g का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है। तो इट इज गिवन एज g इज इक्वल टू 6.67 into 10 to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. They have derived this. ठीक है ना। एंड फोर्स का आपका क्या होगा, यूनिट with respect to each other, or you can say with respect to the earth, क्योंकि we have small things. So there are two cases. So first case is that we have two identical objects, small objects. So first case, two identical objects, that means you have two balls of mass 1 kg. ठीक है। and the distance between them is 1 meter. So what you will get, we will get, just put that value here or here or here, anywhere. You will get F is equal to G. That means gravitational force is equal to the constant, gravitational constant. If the objects are identical, or you can say very small. ठीक है। Now, if second case, in second case what we have taken, second case में we have taken a big object and a small object, that means two big and small objects. तो big objects is our earth, तो we have taken earth and a ball. ठीक है। now तो what is the mass of the earth, mass of the earth, that is your 6 into 10 to the power of 24 kgs, and ball we have taken same 1 kg. Now, so in this, what is your gravitational force? So how we will derive, we should know that what, अब ये देखो, this is your earth. ठीक है। here is the ball and this is the center of the earth. So we should know the radius of the earth first, this one. So what is the radius? Radius is 6.4 into 10 to the power of 3 kilometers. If you put this value in our F is equal to G m1 m2 by r2, and G value we already know, 6.67 into 10 to the power of -11 newtons meter square per kg square, then we will get a force.
तो दैट फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स। ठीक है, तो लाइक दैट वी हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग।